Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padat Vigyan. So students, welcome to another lecture of the chapter Electrostatics. The previous lecture रे आमे discuss करथिले what is the meaning of electric field, what is electric field intensity and how to calculate the electric field intensity due to a point charge. तो आज आमे गोटे नुआ टॉपिक ऊपर डिस्कस करिवा and the topic name is electric dipole. So आज भिडियो रे आमे डिस्कस करिवा what is electric dipole, what is electric dipole moment and how to find the electric field due to an electric dipole. So let's begin. So students, the first question is what is the meaning of electric dipole? So remember that di means two and pole means polarity. Di means two, pole means polarity. So we know that we have two types of charges, positive charge and negative charge. So in a dipole, we have two charges. One is positive charge, the other is negative charge. And they should have the same magnitude. ठीक है, suppose मैं कोई भी -1 microcoulomb and +1 microcoulomb. So they have same magnitude but opposite sign. So if I write the definition of electric dipole, it will be a system of two equal and opposite charges and opposite charges separated by a small distance constitutes an electric dipole. So remember that in an electric dipole we have two equal and opposite charges. तामने दुटा charge थिबो and they have same magnitude but opposite sign. For example, यदि मैं कहिबी a proton and an electron. We know that proton and electron have the same magnitude of charge, but proton is positive and electron is negative. So if I take a proton and an electron and there is some distance between them, then this is also an example of electric dipole. ठीक है जी. So next thing is that electric dipole टा सेटा strong dipole ना weak dipole आमे जानिबा केमती जेमते में डिस्कस करथले प्रीवियस क्लास रे जे electric field it may be strong electric field, it may be weak electric field. So to measure the strength of electric field we use a term known as electric field intensity. ठीक सेमती electric dipole टा गोटे strong dipole ना weak dipole आमे जानिबा केमती ना by using a quantity known as electric dipole moment. ठीक अछि तो जेमती हमें electric field रो strength को measure करूचे by a term electric field intensity, ठीक से भली हमें electric dipole रो strength को measure करिबा by a term known as electric dipole moment. ठीक अछि. So what is electric dipole moment? तो मन रख एठी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी. ठीक अछि. आर सिंबल होची कोन सिंबल होची p वेक्टर. So electric dipole moment is a vector quantity ता माने it has magnitude and direction. So first मो ड्रा करिबी गोटे इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रा करिबी. आमे जानिचे जे डाइपोल रे कोन थिबो गोटे माइनस चार्ज थिबो आ गोटे प्लस चार्ज थिबो. So minus q and plus q. Okay, they have same magnitude but opposite polarity. And there is a separation between them. ठीक अछि. So usually the distance between the two charges जहाँ को मैं कहूचे dipole length ताकू लिखा जाए 2a. The distance between the two charges in an electric dipole is taken to be 2a. कि बात में 2l भी नहीं परिबो. ठीक अछि. तो एठी देखो पॉइंट a रे प्लस q चार्ज अछि, पॉइंट b रे माइनस q चार्ज अछि and a रू b रो डिस्टेंस केते 2a. So 2a this 2a is known as dipole length. आको मैं कहिबा dipole length. ठीक अछि. And this midpoint o is known as the center of the dipole. तो जदि a to b रो लेंथ होउची 2a then and o is the midpoint then b ru o distance केते हबो एटा a हे जिवो
and O ru A point ର distance केते हबो एटा भी हबो small a, so that A plus A is equal to 2a. So the dipole length is 2a and we have two charges having magnitude q and they have opposite sign. तब देखिबा जे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रो मीनिंग कोन. तो जेमती मु कहली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होची गोटे वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तबे फास्ट डिस्कस करिबा जे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रो मैग्नीट्यूड रो वैल्यू केते बा तार फार्मूला कोन. तो डाइपोल मोमेंट रो वैल्यू केते ना एटा होची प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज and separation between them बा मु कहि परिबी dipole length. dipole length तमे देखले जे डाइपोल रे दुटा चार्ज अछि -q +q and both have the same magnitude. तो आमे जे कोनसे गोटे चार्ज रो मैग्नीट्यूड नै जिबा माने तार पॉजिटिव हे नबा and we have to multiply it with the dipole length बा the separation between the two charges. तो dipole moment p रा केते हे जिवो q hela magnitude of charge into the dipole length will be 2a. ठीक अछि. So p equal to q into 2a. This is the magnitude of the dipole moment. Then we'll discuss about the direction of dipole moment. तो मन रखता dipole moment रो direction is from negative charge to the positive charge. So dipole moment is directed from negative to positive charge, ठीक है. So in this diagram the negative charge is on the left side, the positive charge is on the right side. So the dipole moment will be directed from B towards A in this direction, ठीक है. So remember this important point, that electric dipole moment is a vector quantity whose magnitude is equal to the product of the magnitude of either charge and the dipole length, and it is directed from the negative charge to the positive charge. Okay. So now tell me what is the SI unit of dipole moment. Now dipole moment ro SI unit kon he jibo. Okay, the SI unit will be it will be coulomb into meter. Q hela coulomb, charge को हमें express करते coulomb रे, and the dipole length is expressed in terms of meter. So the SI unit will be coulomb into meter. And next हला कौन ना dimension. The dimension of dipole moment केते हबो ना charge रो dimension into dipole length रो dimension. तो charge होची current into time I into t. तो ताको हम लिखि परिबी A1 T1 and 2a is a length, ताको हम लिखि परिबा L1. So the dimension of electric dipole moment is m0 L1 T1 A1. ठीक है, m0 L1 T1 A1. So this is the dimension of the electric dipole moment. Okay, so this is all about your electric dipole, and next I may discuss kariba about the electric field produced due to an electric dipole. So the next topic is electric field due to an electric dipole. So एथिरे तीनटा केस अछि. तीनटा केस कौन कौन ना फास्ट हमें डिराइव करिबा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट. नेक्स्ट हमें डिस्कस करिबा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट, एंड तापर हमें डिस्कस करिबा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी आर्बिट्रेरी बा रैंडम पॉइंट. तो आज वीडियो रे हमें केवल फास्ट केस डिस्कस करिबा जोटा होची इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन बा ताको मैं कहि परिबा एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन. सो व्हाट इज एक्सियल पोजीशन. तो देखो एठी
सपोज हम पाखरे गोटे डाइपोल अच्छी एटा अच्छी माइनस क्यू चार्ज एटी अच्छी प्लस क्यू चार्ज ठीक अच्छे सो पॉइंट ए रे अच्छी माइनस क्यू चार्ज पॉइंट बी रे अच्छी सॉरी पॉइंट ए रे अच्छी प्लस क्यू चार्ज और पॉइंट बी रे अच्छी माइनस क्यू चार्ज and O is the midpoint by center of the dipole. So this line, if I extend it on both sides, that is the axis. तबे आमे कौन करिबा axis को एमती draw करिबा एमती गोटे axis अच्छी and axis उपरे आमे गोटे point choose करिबा ठीक अच्छी suppose I will choose a point P here बाको मैं लिख दूँ M ठीक अच्छी तो dipole रो axis उपरे मु गोटे point M choose कली such that the distance of the point M from the center O is R ठीक है point M रो distance center O रू केते अछि R अछि and suppose 2A is the dipole length ताले B रू O रो distance केते हबो एटा A हे जिवो and O रू A रो distance केते हबो एटा भी हबो A हे जिवो ठीक अछि तो एबे हमें देखिबा जे पॉइंट एम रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसुची तो आमे प्रीवियस क्लास डिस्कस करिचे जे गोटे पॉइंट चार्ज पाई इलेक्ट्रिक फील्ड रो फॉर्मूला कोन ना k q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस रो स्क्वायर तो जदि गोटे सिंगल चार्ज थिबो तापे आमे केवल गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड पाइबा बट जेहेतु डाइपोल रे दुईटा चार्ज अछंती सो एट द पॉइंट m वी विल गेट टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स सो जमती आमे देखुतले जे इन केस ऑफ कूलम्स फोर्स जदि गोटे सिस्टम रे मल्टीपल चार्ज थिबे देन आमे जदि गोटे पर्टिकुलर चार्ज ऊपर फोर्स बाहर करचे देन दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस मल्टीपल फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस सो टू फाइंड द नेट फोर्स आमे कोन करचे आमे इंडिविजुअल फोर्स को आमे वेक्टोरियली ऐड करचे ठीक से भली ए डाइपोल केस रे आमे देखिले कोन ना पॉइंट एम रे आमे दुईटा इलेक्ट्रिक फील्ड पाइबा गोटे पाइबा प्लस क्यू चार्ज पई आ गोटे पाइबा माइनस क्यू चार्ज पई एंड देन आमे जतरे बाहर करिबा द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आमे कोन करिबा आमे ताको वेक्टोरियली ऐड करिबा ठीक अछि सो दैट इज द प्रोसेस सो देखो एठी आगो आमे लिखिबा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज केते हबो E ड्यू टू प्लस क्यू तो एबे देखो प्लस क्यू चार्ज ता पॉइंट ए रे अछि एंड तार डिस्टेंस पॉइंट एम रु केते अछि ए एम ठीक अछि तो देखो ओ रु एम होछि केते आर आ ओ रु ए होछि ए तो ए रु एम केते हिजबो एटा हिजबो आर माइनस ए तो ई प्लस क्यू केते हबो याको हम लिखि परिबा के इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय ए एम स्क्वायर ए एम रो स्क्वायर ओके एंड आमे डिस्कस करले प्रीवियस क्लास रे जे जदी गुडे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज अछि देन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट तो पॉइंट एम रे प्लस क्यू चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करिवो that electric field will be directed towards right माने away from the plus q charge आको हम लिखिबा E plus q vector ओके तो एबे देखिबा तार वैल्यू केते होची ओके एबे देखो एमे जो E plus q पाइले तार डायरेक्शन कोड अछि टुवर्ड्स राइट अछि एंड आमे एबे रिसेंटली डिस्कस करिचे जे गोटे डाइपोल मोमेंट इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज तो एठी पॉइंट बी रे माइनस क्यू चार्ज अछि पॉइंट ए रे प्लस क्यू चार्ज अछि तो डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन ता केमत रहइबो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ठीक अछि फ्रॉम बी टू ए तो एबे में कोन देखले ना E plus Q रो डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर तो मुझे लिखि परिबी P कैप माने कोन ना इट इज ए यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग द डाइपोल मोमेंट तो जेहेतु E plus Q रो डायरेक्शन मैच करूची विथ P वेक्टर so I can write P cap here तो एटा केते हिजबो K into Q divided by AM केते हिजबो AM हिजबो R minus A ठीक अछि तो R minus A रो होल स्क्वायर लाइट ही into P cap ओके नेक्स्ट हम लिखिबा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट M ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज माने E minus Q तो देखो माइनस क्यू चार्ज अछि पॉइंट B रे अछि तो हमें देखिबा जे पॉइंट B रु पॉइंट M रो डिस्टेंस केते होची जोड़ा हिजबो R plus A O रु M होची R
O रु B हो A तो B रु M हो R plus A तो एबे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज केते आसीबो K into the magnitude of charge divided by दा हो R plus A रो whole square and if you look at the direction दा कुआड जीवो so we know that electric field due to a negative charge is directed towards the negative charge ता माने जेहेतु negative charge left रे अछि so the electric field due to negative charge will be directed towards it so E minus Q vector will be towards left okay so you can see that the direction of E minus Q is opposite to the dipole moment तो आम लिखि परिबा माइनस ऑफ पी कैप ठीक अछि so E plus Q is along P vector but E minus Q is opposite to P vector so I can write that K into Q divided by R plus A whole square into minus of P cap so this is the electric field due to negative charge and this is the electric field due to positive charge so हम पाखे दुईटा electric field अच्छी and we have to find the resultant electric field so the net electric field at the point A बा जहाँ को मैं कहूँचे axial electric field E axial एटा केते हबो the vector sum of the two electric fields तमने E plus Q vector plus E minus Q vector तो एटा केते हेजिबो एटा हेजिबो K Q divided by R minus A रो whole square into P cap then plus KQ divided by R plus A रो whole square into minus P cap okay so that equal to এটা কেতে হেজিবো KQ by R minus A whole square into P cap minus KQ divided by R plus A whole square into P cap so it plus minus it minus हेगला नेक्स्ट स्टेप रे हमें कौन करिबा वी कैन टेक k q कॉमन तबे दे k q कॉमन नै जिबा हमें कौन पाइबा हमें पाइबा 1 by r minus a रो होल स्क्वायर minus 1 by r plus a रो होल स्क्वायर एंड होल इनटू इटी बाहर रहइबो p कैप रहइबो ठीक अछि ओके तो देखो एटी हमें बे नेक्स्ट स्टेप कौन करिबा एठी k into q एठी बे एलसीएम केते जिवो LCM जीवो r minus a whole square into r plus a whole square and in the numerator we will have r plus a whole square minus r minus a whole square and you have p cap here ठीक अछि so that equal to kq एबे देखो a plus b whole square minus a minus b whole square that equal to 4ab तो एटा हे जिवो 4 RA divided by in the denominator we have R minus A whole square into R plus A whole square तो एटा हेजिबो R square minus A square whole square माने A minus B into A plus B equal to A square minus B square so using that formula I can write that R square minus A square whole square and you have P cap here ठीक अछि so next हम कोन करिबा एठी that equal to अबे देखो k q into एटी जो 4ra अछि ताकु लिखि परिबी 2a into 2r divided by in the denominator we have r square minus a square whole into p cap तो देखो एटी जो q into 2a अछि q into 2a is the dipole moment हम अबे डिस्कस करि जे the product of magnitude of either charge and the separation between them is the dipole moment तो अबे हम लिखि परिबा को k into p into 2r divided by r square minus a square whole square into p cap ठीक अछि so finally we got that the electric field due to an electric dipole at the axial point is given by the formula kp2r divided by r square minus a square whole square r square minus a square whole square into p cap ठीक अछि so this is the formula but एठी हम गोटे स्पेशल केस डिस्कस करिबा व्हाट इज द स्पेशल केस ना जदि हम पाखरे गोटे बहुत शॉर्ट डाइपोल थिबो माने गोटे स्मॉल डाइपोल थिबो तो सेही केस रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसीबो
So for a short dipole, for a short dipole, for a short dipole, देखो शॉर्ट डाइपोल माने कौन आमे जो पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करूचे ता माने जो आमे पॉइंट एम रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कले से पॉइंट रो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल जहाँ को आर नीचे द वैल्यू ऑफ आर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द डाइपोल लेंथ माने आर इज मच लार्जर देन 2a तो जाको मैं कहबा शॉर्ट डाइपोल तो यदि शॉर्ट डाइपोल थिबो ताले कोन हबो आर विल बी मच ग्रेटर देन a तो मुझे लिखिपारि जे आर स्क्वायर इज अगेन मच लार्जर देन a स्क्वायर so r square minus a square is approximately equal to r square. Okay, r square minus a square is approximately equal to r square because r square is a very large quantity and a square is a very small quantity. तो सेही कंडीशन रे हमें यदि e axial बाहर करिबा तो e axial केते आसीबो k into 2pr देखो k into 2pr डिवाइडेड बाय तळे देखो जो अछि r square minus a square whole square अछि तो r square minus a square को हम लिखि परिबा ओनली r square तो एटा हे जिवो r square square into हम लिखिबा एठी p cap so e axial vector is equal to k into 2pr divided by r to the power 4 into p cap तो ये कटिगला ये आसो r क्यूब आसीज सो फाइनली आम कौन पाइले ना e axial vector is equal to k into 2p divided by r cube into p cap k into 2p divided by r cube into p cap. So this is the final expression for the electric field due to an electric dipole at its axial point and it is for a short dipole. सो एठे में नोटिस कोन करूचे जे हमें प्रीवियस क्लास रे जो पढ़िथिले जे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज that varies inversely as the square of the distance between square of the distance from the charge. But in case of a dipole, you can see that the electric field varies inversely as the third power or cube of the distance. So this is the basic difference between electric field due to a point charge and electric field due to an electric dipole. So students, that's all for this lecture. तो आज मैं discuss करें what is electric dipole, what is dipole moment, what is the direction, what is the unit of dipole moment, and then we derived the mathematical formula for the electric field due to an electric dipole at its axial point. So in the next class we will discuss about the second case. We will derive the electric field due to an electric dipole at its equatorial point. So till then, have a nice day and bye bye.